हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। आज के ट्यूटोरियल में हम सेमी क्लासिकल की कुछ मूवमेंट्स को डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि डांस का एवोल्यूशन होता आया है, उसमें से कई सारी नई शैलियाँ डिसिप्लिन्स डेवलप हो गई है, जिसमें से एक है सेमी क्लासिकल। इट इज मोर रीसेंट देन द रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स। ऑल्सो इट इज लूजली बेस्ड ऑन क्लासिकल डांस फॉर्मेट। शायद उसका कॉन्टेक्स्ट या इथॉस उतना बड़ा नहीं है जितना किसी क्लासिकल डांस फॉर्म का होना चाहिए, लेकिन उसका जो एक एस्थेटिक सेंस है, उसकी जो मूवमेंट्स है, वो क्लासिकल डांस से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और इसीलिए जो कथक बेस्ड सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, उसकी कुछ मूवमेंट्स हम डिकोड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है कथक या सेमी क्लासिकल सीखने में, तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। न्यू ईयर में अगर आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं या आज से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं या खुद से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आई हाईली रेकमेंड दैट यू चूज फ्रॉम वन ऑफ आवर कोर्सेज। नाउ कमिंग बैक टू आवर लेसन, हमारे जो सबसे पॉपुलर गाने होते हैं पॉपुलर म्यूजिक में, बॉलीवुड म्यूजिक में, उसके कुछ पॉपुलर बीट स्ट्रक्चर्स भी है। वो जनरली होते हैं either 4 beat structures which go like 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 and so on, या फिर वो हो सकते हैं 3 beat structures that go 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर्स है रिदम के, जो आप इन पॉपुलर गानों में पाएंगे। और आज जो हम डिकोड करेंगे वो है 3 बीट स्ट्रक्चर्स में आने वाली मूवमेंट्स। ये कई बार हम कथक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इजीली सेमी क्लासिकल में इसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो ये कुछ हेल्पफुल गाइडलाइंस है। जो हमारी पहली मूवमेंट है वो चक्र हस्तक से काफी मिलती जुलती है। अगर आपने हमारा चक्र हस्तक का लेसन देखा है, तो उसमें हमने शुरुआत की है ऊर्ध्व चक्र हस्तक से, जो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें थोड़ी रिजिडिटी इस बात की है कि आपको एक सिंगल ट्रैक फॉलो करना पड़ता है विच गोज अप और एज इट इज कम्स डाउन। बट इन दिस केस इस रिजिडिटी को थोड़ा बहुत हम लूजन अप कर सकते हैं। बट व्हेन आई से थोड़ा, आई रियली मीन इट। इट हैज टू बी अ वेरी सटल शिफ्ट। इंस्टेड ऑफ डूइंग वन सिंगल लाइन, टर्निंग योर रिस्ट एंड ब्रिंगिंग इट बैक, what you can do is follow that line when you're going up। जब आप इसे घुमाते हैं तो आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं उसे बाहर ले जाने में। Turn it with some liberty, with a free wrist outside, then come back in the original position। The home position is this as always, जिसे हम उत्पत्ति कह सकते हैं। लेकिन जब बात क्लासिकल की आती है, तब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मे बी what it demands is a little bit of more flair than what you see in Kathak। Hence, इसमें जो हमारा टॉर्सो है वो ऊपर जाकर वापस आता है जब हम ऊर्ध्व चक्र हस्तक करते हैं। इन सेमी क्लासिकल, ट्राई टू मूव इट sideways, so it would be 1 2 3 2 2 3, starting with your right. Your underarm is supposed to be closest to your waist when you bend in this side. Make sure you're not bending in the front or in the back at all. It has to be strictly sideways when you do so। जब आप इसके पैरों को सीखेंगे, तब आप इसमें एक और एडिशन ये कर सकते हैं कि आपका जो भी हाथ चल रहा है, उसी हाथ का कंधा हल्का सा पीछे आप खींच सकते हैं। It gives it a little bit more flair। अब आते हैं हमारे फुटवर्क पर। You can start with your heels close together। We will start with our right first, going 1 2 3, switch it up, 4 5 6। Let's do this faster, 5 6 7 8, right left right left right left। Easy।
इस पे एक प्रो टिप ये है कि जब भी आप आगे स्टेप करें तो सीधे पैर से स्टेप ना करें, इट विल नॉट गिव यू द रिक्वायर्ड बैलेंस. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू is step with some angle in your ankle so that you can hold the ground correctly. Okay, let's put the footwork and hand movement together. 5, 6, 7, chalo. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1. The next movement is actually quite simple. You start from your home position, right in front of your chest. यहाँ से एक छोटा सा गोल बनाएं जो आपकी कलाई से ड्रॉ होता है. Hence, your hands go up. Make sure that your fingers are passing from in between your ears and your shoulders. आपके कान और कंधे के बीच से ये पास होते हैं. एक सर्कल कंप्लीट होता है. When you reach this point, close it back again in a mudra. Once again, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Easy. इस सर्कल को बड़ा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर हैंड्स. इट इज सपोज टू बी अ स्मॉल सर्कल ड्रॉन ओनली एंड ओनली यूजिंग योर कलाई और योर रिस्ट. Let's understand what we are going to do with our feet. The footwork is actually quite simple. We again start with our heels together. Let me reveal here कि हम actually spins या चक्कर लेने वाले हैं. But don't worry, these are slower spins. We start with our right. Right को आगे बढ़ाए. Cross it ahead of your left foot. Use 2 to come in front with your left. 3 is for you to place your right alongside your left. You have to switch it up. Alternate this and start with your left, turn around with right, left. Easy? Let's do this together on the count. 5, 6, 7, chalo. 1, 2, 3, 2, 2, 3. So now when we put our footwork and hands together, it looks something like this. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. इसमें एक प्रो टिप ये है कि आप जितना टाइम आपके सेंटर में देख पाए, प्लीज मेक श्योर टू फोकस ओनली एंड ओनली इन द सेंटर. प्लीज डोंट लुक अवे इन द मिडल ऑफ योर चक्कर. सेकेंडली, जितना आप अगेन साइडवेज बेंडिंग दे पाए, उतना ज्यादा वो मूवमेंट जो है उसे फ्लेयर भी मिलेगा एंड वो खुल जाएगी इवन दो द सर्कल दैट यू आर मेकिंग इज क्वाइट स्मॉल. The third movement again is pretty easy but also has a lot of scope for you to add a lot of breath work, torso work along with it. The hands start again from the center. यहाँ से आपका जो लेफ्ट हाथ है उसे बाहर स्ट्रेच कीजिए. This is the start of your 3 beats. Okay, so make sure it is not one, it starts from here, then you pull it inside. So 1 is actually pulling your hand inside, not taking it out. This is the start in itself. This is not the start. And we pull it inside in 1, 2 में हम इस एनर्जी को लेफ्ट से राइट हाथ में स्विच करते हैं और राइट हाथ बाहर जाता है, क्रिएटिंग वन क्लीन डायगोनल लाइन. आपका लेफ्ट हाथ हल्का सा पीछे है, राइट हाथ ऑब्वियसली इसीलिए आगे आएगा, नॉट टू द साइड, 45 degrees ahead from your side. Okay, let's go again. 5, 6, 7, 8. Go 1, 2, 3. Make sure to follow your hands with your eyes. Eyes have to be parallel to your hands, not literally looking at your fingers, but draw a parallel line with your eyes and your gaze with your hands. Now you do the same thing on the other side. Let's look at the footwork to understand how your entire body will also coordinate with your hands to make a very beautiful movement.
Let's understand the footwork here. It goes 1 starting with your left, step back diagonally. हम टो से शुरुआत करेंगे. धीरे धीरे बैलेंस शिफ्ट करते वक्त ऐसा हो सकता है कि both your feet are on the toes. Now switch your balance on your left while your right is stretched out, which means the left foot is flat on the floor. Now do the same thing with your right. Step back, go on your toes, shift your balance. This has to be happening on counts of 3. Okay, so accommodate 3 beats every time you do it, going 1, 2, 3, 2, 2, 3. Superb. Let's put this together now. And 5, 6, 7, chalo. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Make sure that every time your hand is working, it is not just a hand movement, it's a body movement. मे बी उसका जो स्ट्रेच है वो हाथों से दिखा रहे हैं, but that doesn't mean that your hands are dancing independent of your body, which also means that your torso has to work with your hands, also creating diagonal lines every single time you step back. And that was all for today. I hope आपको ये सीखने में मजा आया हो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Again, in the coming year, please don't hesitate, take that extra step and learn how to dance. And if you're really keen on it, make sure that you enroll in our courses. You can get in touch with the WhatsApp number given below. Until then, keep dancing. I'll see you in the classes super, super, super soon.